students to standard 10th chemistry chapter 4 carbon and its compounds, and this is the very first session. All right children, so you are most welcome after the festival of Diwali. I hope you have enjoyed the festival. Okay children, there is one saying in Gujarati, Jagya Tyarthi Sawar. Yes children, if you haven't done your study work well so far, it's okay, but it's now time to awaken. Please get up, wake up, all right? Watch the videos regularly and spare some time also for unwatched videos and study regularly. Time flies very fast children. So please see that you study regularly, you revise regularly so that everything is fresh in your minds. We do not know about the future situations, but your board examinations would be definitely conducted and they will suddenly tell you, okay, next month is your board examination. What you will do? If you do the work the way you did in the past, then suddenly if they declare your examination, they have said it is in the month of May, but again, right, if the circumstances do not favor, the work may continue as we have been doing in the past. All right, and suddenly when the date of examination is declared, you will have no time to prepare everything. So be very punctual. I hope you will listen to me. I hope you will listen to yourself. I hope you will do what your conscience say. Children, you are passing through the hard times. In fact, everyone. But then we will have to adapt to the situation. And yes, we will have to cope up and do well. We will have to survive in every way. Good luck to you children. Okay. Now, talking about the world, हमारी पूरी दुनिया, all right? If you divide the things found, you can divide into two major groups. They are living beings and non-living beings. Correct, children? Normally, children, in every living being, whether it is plant or animal, you will find carbon compounds. Carbon in any form is always present in living beings. Alright? As for example, you take a leaf, burn it, it becomes black. That is shows presence of carbon. Alright? Take anything, flesh of an animal, heat it, it turns black, it burns, it turns black. That is nothing but carbon. So each and every part of living being has carbon in it in one form or the other. So carbon is very important for living beings, and that's why children, today we are going to study about carbon and its compounds. Alright children, and why it is so important for living beings, or what has made carbon so important for living beings. So we'll need to study its properties, its characteristics, alright, its reaction with other elements, other substances. Alright children. Now see this, non-living beings, you can say they contain carbon. They contain carbon and they do not contain carbon. Alright, but if you talk about coal, petroleum, natural gas, alright, they are non-living beings, they are non-living things, and yet they contain carbon, But you know children, these are fossils of living beings that have formed millions of years ago. So ultimately, the carbon present here, the source is living beings. Is that clear to you?
All right, children, before we move to carbon and its compounds, let's discuss about compounds. All right. All the compounds found on the earth are divided into two types: organic compounds and inorganic compounds. Well, briefly I'll discuss about them. Well, in future you are going to learn both organic and inorganic compounds in higher classes. In fact, there is chemistry based on organic substances and chemistry based on inorganic substances. So organic chemistry and inorganic chemistry, they are the two divisions of chemistry. All right, so that you will learn in detail in future. But what are organic compounds? Very simple, children. Carbon containing compounds can be called as organic compounds, and non-carbonic compounds, you can say non-carbonic compounds, all right, जिसमें carbon नहीं है, they are inorganic compounds. Is that clear to you? Sure. Okay, fine, children. Now, if carbon containing compounds are very important for living organisms, let's see how they are formed. Let's study the characteristic of carbon. Children, what is atomic number of carbon? 6. So you may write carbon 6. Electronic configuration 2 and 4. If you want to show the atom, all right, this is nucleus, then this is first orbit which contains 2 electrons. So you may write 1 electron and 2 electron. They are in the first orbit. Let's say this is second orbit, and in the second orbit there are 4 electrons. So 1, 2, 3 and 4. Children, the innermost orbit, the first orbit, is completely filled, all right, and the second orbit is incompletely filled. Here there are only 2 orbits. The inner orbit is completely filled and the second orbit is not completely filled. I don't want the orbits which are completely filled, so I remove them. Only one was here, so I removed that completely filled orbit. All right, now how many electrons are left? 4. All right, now this is represented with symbol C of carbon. C stands for carbon atom, and then 4 electrons are represented by 4 dots surrounding carbon. This is electron dot structure of carbon. You can use dot or even the cross marks. This 4 cross marks shows 4 free electrons, valence electrons, correct, of carbon. So either you can use dot or cross mark to represent free electrons, valence electrons surrounding the atom of carbon or surrounding the atom of any element. Is that clear? Okay, chali. Now let's see what happens. There are 4 electrons in the second orbit. Now the orbit is second, so to become stable it has to complete octet, correct? That means 8 electrons are required. That you have learned. If it is first orbit, then 2 electrons are required for complete accommodation. And after that, second, third, fourth, any orbit, octet has to be complete for the atom to become stable, correct? Here free electrons are there, so atom is not stable, and the atom always wants to become stable. Every atom having free electron in the outermost orbit, all right, have tendency to become stable by completing the octet. Matlab, the outermost orbit should be completely filled, and they do so by losing electrons or gaining electrons. All right, so carbon atom requires 4 electron. उसको 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 मिल गए तो 8 हो गए, so octet is complete and it forms
carbon minus 4. All right, children. Same, there is another option. Carbon, all right, loses 4 electrons and becomes plus 4 ion by losing 4 electrons. Children, in the first case, carbon gains 4 electrons. So 4 plus 4, it becomes 8. So it becomes stable. All right. In second case, these 4 electrons are lost. So only first orbit is left. So there are no free electrons in the outermost orbit. So the atom has become stable by getting converted into iron. But the reality is carbon neither gains electrons nor gives away electrons, donate electrons. ऐसा क्यों? Children, we know in the nucleus of carbon there will be 6 protons and there are 6 electrons totally revolving. Alright. Now if it gains 4 electrons, then it becomes 10 electrons. तो ये 4 electrons को orbit में रखने के लिए energy चाहिए. Now the number of protons are only 6 in the nucleus. So this nucleus cannot hold this extra 4 electrons in the orbit. So this does not happen in carbon. Carbon will not gain 4 electrons to form negative ion, to become stable. Alright? उसी तरह कार्बन ये भी नहीं करता है. क्यों? To remove 4 electrons, ये चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए it requires lot of energy. और कार्बन के न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि it can throw out those 4 electrons from its second orbit. So it will neither lose electron and become positively charged ion. So carbon cannot give electrons, cannot take electrons. Okay. So what it does? How does it forms a compound? By sharing of electrons. Carbon shares electrons with atom of other elements as well as atom of another carbon. So let's see how that happens. The first one, let's see carbon sharing electrons with hydrogen. Now as you know, atomic number of carbon is 6, so electronic configuration is 2, 4. So it has 4 free electrons. So any carbon atom can be represented by C and 4 dots surrounding it. That is electron dot structure for carbon. Alright. The atomic number of hydrogen is 1, so electronic configuration is 1. That's it. And the first orbit, you know first orbit में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. Alright. So H is for hydrogen atom और उसके फर्स्ट ही ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है. I represent by dot. So surrounding hydrogen I have put just 1 dot representing 1 free electrons. Surrounding C representing carbon atom I have put 4 dots. Alright. Representing 4 free electrons. Okay. So this C represents nucleus of carbon, H represents nucleus of hydrogen. Is that clear? Fine. Now how they share electrons? Be careful children. Okay. These are the 4 free electrons. उसे चाहिए 8. Outermost orbit में totally 8 चाहिए. So 4 are there. So it requires 4 more. तो एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए. So this hydrogen atom gives 1 electron, its red electron to carbon for its sharing, and carbon gives its blue electron to hydrogen for its sharing. Now children, this shared pair of electrons belong to both. Carbon claims कि वो मेरे हैं और हाइड्रोजन claims कि वो भी मेरे हैं. So दोनों उसको बराबर पकड़ के रखते हैं और ये पकड़ बहुत मजबूत है. So they hold the free shared pairs of electrons tightly, forming a bond between them. यहां हाइड्रोजन को 2 चाहिए है ना to become stable. So hydrogen becomes stable by sharing 2 electrons क्योंकि उसके तो 2 हो गए, एक खुद का और दूसरा कार्बन का. लेकिन कार्बन के पास कितने हुए 1 2 3 4
और एक जो हाइड्रोजन ने दिया 5, सो अभी भी 8 नहीं हुआ. सो व्हाट इट डज, इट शेयर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन विथ अनदर हाइड्रोजन. तो ये सेकंड हाइड्रोजन का भी डबलेट कंप्लीट हुए, उसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 6, still it is 6. We want to make 8. So what we'll do? Another hydrogen atom shares 1 electron with the third electron of carbon. ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, so third hydrogen is stable. कार्बन के भी ये 2 हो गए, कार्बन is going to be sharing this. So 2, 4, 6 or 7. Still carbon hasn't become stable. To become stable it requires 8. अभी तो 7 ही हुए, खुद के 3 और सामने 3 हाइड्रोजन से 3 मिले 6 और ये 7. So one more hydrogen will share electron. So ये हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया और ये पेयर. So carbon shares first pair, second pair, third pair and fourth pair with 4 atoms of hydrogen, 4 pairs of electrons, so 8. Now it is complete. लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे, कार्बन उसके 4 डॉट और हाइड्रोजन के 4 डॉट, H H H H will circle those 8 electrons of carbon now and 2 electrons of hydrogen each. So this hydrogen attaches with carbon here, this hydrogen attaches with carbon here, third here and fourth here. So all 4 hydrogen atoms combine with 1 carbon atom forming a compound. Carbon is 1 and hydrogen are 4, so CH4. The molecular formula, this is electronic structure. इसको क्या कहते हैं? Electronic structure. Yeah, you can say electronic formula. This is chemical formula or molecular formula. Molecular formula. All right, children. इस कंपाउंड का नाम है मीथेन. The name of this compound is methane. So this is how carbon combines with 4 hydrogen atoms to form methane. Is that clear? Chaliye. Now, how carbon shares electron with oxygen. So let's see how carbon shares. This is second one. Carbon sharing electron with oxygen atom. Fine. Carbon, ये निकाल दो. Oxygen, the atomic number is 8. So it is 2, 4. So free electrons are 6. Correct? You know, carbon surrounding 4 dots, that represents the free electrons of carbon. Or oxygen, let me put cross marks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्योंकि 6 है, 6 free electrons. Now how they share electrons? This time, see how I write carbon? 2 and 2, 4 electrons. Why I have done that? You will soon realize. इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटली 4 चाहिए 2. सो 2 शेयरिंग के लिए गए ऑक्सीजन के और 4 बच गए. 1, 2, 3, 4. ऑलराइट. उसी तरह यहां दूसरा ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देंगे और उसके 2 और 2 4. नाउ यू सी, these are the 8 electrons of oxygen 2, 4, 6 or 8. These are the 8 electrons of oxygen 2, 4, 6 or 8. 6 खुद के और 2 शेयरिंग में मिले कार्बन से. और कार्बन को देखो, लुक एट कार्बन. यस, 4 अपने और 4 ऑक्सीजन के, टोटल 8 हो गए. सो दिस इज ओके. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला बन गई ऑफ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी? CO2. कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलराइट.
So this is how carbon shares electron with oxygen to form compound. Okay, children, this is shared pair of electrons. Shared pair of electrons. All right. This shared pair of electrons form a bond between carbon and oxygen, which is called covalent bond. And in a molecule, in a compound, if there is existence of covalent bond, then that compound is called covalent compound. That we have learned earlier. Okay, children? Fine. Now let's see how carbon shares electrons with sulfur. Alright? For sulfur, the atomic number is 16. So electronic configuration 288. This is completely filled. Sorry, 286. 2 plus 8, 10 and 6, 16. Correct? So this is incompletely filled. So for sulfur also, you can have 6 dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And for carbon, 1, 2, 3, 4. I'll put cross mark for carbon. How they are going to share electrons? Children, first carbon के 2 इलेक्ट्रॉन उसने शेयरिंग में दिए और सल्फर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए. सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए, बचे 4, तो वो 4 लिख दिया. और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी शेयर्ड, 2 more are left. That will be shared by another sulfur atom which has 6 free electrons. 2 शेयरिंग में गए, 2 4 और 2 6 बच गए. So now you can see this sulfur 2 4 6 8, second sulfur 2 4 6 8 और carbon 4 और 4 8, and this is carbon disulfide. There is a covalent bond between carbon and sulfur because electrons are shared and covalent compound is formed. All right, is that clear to you, children? So this is how carbon shares electron with atoms of different elements, all right, and form a compound. Children, look. Carbon is one element amongst 118 which can form bond by sharing electrons with so many atoms and in different ways. I'll give you one example here. Chlorine. The atomic number is 17. So 2, 8 and 7. It has 7 free electrons. Hydrogen, as we have seen, it has 1 electron free. Now see, directly I am drawing carbon. Uske 4 dots. Alright. It shares 1 electron with hydrogen. 1 electron with hydrogen. 1 electron with hydrogen. ये हाइड्रोजन के तो 2 ही चाहिए, सो उसका तो स्टेबल हो गया. बट क्लोरीन के 7 है, सो ये क्लोरीन Cl, उसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गया. 2 3 4 5 6 और 7. 2 4 6 और 7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. हाइड्रोजन का डबलेट और क्लोरीन का ऑक्टेट. और कार्बन का देखो 2 4 6 8, सो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. सो दिस इज CH1 2 3 H3 और Cl. इसको कहते हैं मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोमीथेन. उसे क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है. Whatever that is the chemical name. ये केमिकल फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. और चिल्ड्रन, इसको बॉन्ड जहां भी शेयर, एक पैर शेयर किया तो एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करना है. यहां भी 1 पैर, एक छोटी लाइन. यहां 1, हियर 1. यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, और यहां क्लोरीन है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल क्लोराइड. Structural formula. Is that clear, children? Okay, fine. Children, very interesting. देखो, carbon forms bond with hydrogen.
carbon forms bond with second hydrogen, carbon forms bond with this. Now this is gone. हमने क्लोरीन निकाल दिया, उसकी जगह पे दूसरा कार्बन ले लिया. ये इलेक्ट्रॉन इसका दिखाता हूं कार्बन का, और दूसरा कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा, एंड इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यहां कार्बन के साथ कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एंड दिस इज पॉसिबल. सो आपको नया कंपाउंड मिला. आपके पास CH3Cl था, अब आपके पास C2 और H कितने हो गए? 3 और 3 6. ये नया कंपाउंड, इसे कहते हैं इथेन. ऑलराइट चिल्ड्रन, इसको मैं निकाल दूं एक हाइड्रोजन को, और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 शेयर करवा दूं, तो फॉर्मूला क्या बन गई? C2H5, 5 है, और एक क्लोरीन. दिस इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड. ये इथाइल क्लोराइड बन गया. आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? सो सी द नंबर ऑफ वेज कार्बन कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ another carbon or with different elements. All right, children? Children, a very important property of carbon is catenation. Let's try to understand what is catenation. Here is carbon, 1 2 3 4 electrons. It shares 4 electrons with hydrogen, hydrogen. All right? और स्ट्रक्चरली यू मे राइट लाइक दिस. यहां 1 पेयर शेयर हुआ, 1 पेयर, 1 पेयर और 1 पेयर विथ हाइड्रोजन. इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, और इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ऑलराइट, और C1H4 उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और ये जो कंपाउंड बना है उसे कहते हैं मीथेन. ऑलराइट, 1 carbon combining with 4 hydrogen to form a molecule or a compound which is called methane. Alright, children, what I do? I remove this hydrogen. The rest of the thing I keep as it is. 1 2 3. ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और कार्बन का अपना डॉट इलेक्ट्रॉन. एंड I removed hydrogen with its 1 electron, and then I'm sharing the electron with the second carbon atom. उसके 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए गए, 3 बचे, और 3 अगेन we are going to share with hydrogen. See children, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनदर कंपाउंड, इसे कहते हैं इथेन. दिस इज कॉल्ड इथेन. ऑलराइट, लॉन्गर मिला, इससे लॉन्गर मॉलिक्यूल मिला, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिला. करेक्ट, इसकी फॉर्मूला. ओके, नाउ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, फिर 1 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ. सेकंड कार्बन एटम ने ऊपर एक हाइड्रोजन, राइट में एक और नीचे. सो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन. और केमिकल फॉर्मूला, कार्बन के 2 एटम है C2, 2 नीचे 2 ऊपर और 2 साइड पे, सो H6. दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई एम गोइंग टू रिमूव दिस हाइड्रोजन नाउ. द रेस्ट आई एम कीपिंग एज इट इज. C, ये C के 4 एटम इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जैसे शेयर किया. ऑलराइट, और ये सेकंड कार्बन के साथ जो शेयर किया था वो ऊपर हाइड्रोजन के साथ, नीचे हाइड्रोजन के साथ. लेकिन मैंने ये हाइड्रोजन निकाल दिया, एंड आई एम गोइंग टू ऐड न्यू कार्बन जिसके 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड और फोर्थ. अब ये जो रिमेनिंग 3 है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे, तो आपका नया कंपाउंड बन गया. दिस इज कॉल्ड प्रोपेन. ये कंपाउंड का नाम है प्रोपेन. 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच शेयरिंग, और फर्स्ट कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है. ये मिडल वाला कार्बन ऊपर नीचे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, और लास्ट कार्बन ऊपर नीचे और राइट में हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है.
This is structural formula of propane. और केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन के कितने एटम्स हैं? 3, नीचे 3 ऊपर 3, मतलब 3 का डबल 6, प्लस राइट लेफ्ट के 2. सो आई कैन से हाइड्रोजन 2 टाइम्स 3, 3 है तो 2 टाइम्स 3 प्लस 3, मतलब सॉरी प्लस 2. सो C3H8. यहां भी वैसा ही हुआ, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन नीचे 2 ऊपर 2, सो 2 टाइम्स 2 और लेफ्ट राइट के 2, सो C2H6. अब आप बता सकते हैं दूसरा क्या आएगा? आप एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, एक कार्बन ज्वाइन कर दो, तो कितने कार्बन होंगे? 4, C4H, इसके डबल 2 टाइम्स 4 और राइट लेफ्ट के 2 ऐड कर दो, सो C4H, 4 2 8 and 10. दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन. इसे ब्यूटेन कहते हैं. चलिए, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसको कार्बन ज्वाइन कर दिया, तो C5H, 5 का डबल 10, 10 प्लस 2 12. एक और कार्बन, एक हाइड्रोजन निकाल के एक कार्बन ऐड कर दिया, सो कार्बन 5 की जगह पे 6 हो गए. हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 के डबल 12 और 12 प्लस 2 14. ओके, एक और हाइड्रोजन. ओके, दिस इज पेंटेन. इसे कहते हैं पेंटेन. 6 कार्बन वाले को कहते हैं हेक्सेन. हेक्सेन. 7. ओके, H, 7 का डबल 14, 14 प्लस 2 16. इसे कहते हैं हेप्टेन. ऑलराइट, एक और कार्बन ऐड कर दूं. देखो, लॉन्गर चेन, आपको लंबी चेन मिलती जाती है, मॉलिक्यूल लंबा मिलता जाता है और ऐसे मिलते ही जाएंगे. आपको एक हाइड्रोजन निकालो और कार्बन ज्वाइन कर दो और 3 और हाइड्रोजन उसको दे दो. सो यू कीप ऑन गेटिंग कंपाउंड्स आफ्टर कंपाउंड, कंपाउंड्स आफ्टर कंपाउंड. और ये सारे कंपाउंड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. हाइड्रोकार्बन compounds. Why they are called hydrocarbon compounds? Very simple. In their molecular structure, you will find only 2 types of atom, one of hydrogen and other of carbon. चलिए, now C8. तो number of hydrogen atom कितने होंगे? 8 के डबल 16 प्लस 2 18 और उसे कहते हैं ऑक्टेन. ऑलराइट, C9. 8 के एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इसमें से एक कार्बन ऐड कर दिया, सो C9 और हाइड्रोजन कितने होंगे? इसका डबल 18 प्लस 2 20 और उसे कहते हैं नॉनेन. ऑलराइट, एक और 10 कर दिया, इसका डबल 20 और 22, इसे कहते हैं डिकेन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डिकेन. ऐसे आपको, यस, हाइड्रोकार्बन विथ 1 कार्बन एटम इज मीथेन. Hydrocarbon with 2 atoms of carbon is ethane. Hydrocarbon with 3 atoms of carbon is propane. Hydrocarbon with 4 carbon atom is butane. With 5 carbon atom, pentane. With 6 carbon atom, hexane. With 7 carbon atom, heptane. With 8 carbon atom, octane. With 9 carbon atom, nonane. With 10 carbon atom, decane. Like that, you will get hydrocarbon with 11 carbon atoms in the molecule, 12 carbon atoms, 13 carbon, infinite. You keep on getting. So just imagine the number of hydrocarbon compounds that are formed, or you can make it artificially as well. Natural form में तो है ही. Children, ये सारे coal, petroleum, natural gas, वो सब mixture of hydrocarbon compounds है. Methane, ethane, propane, ये सब natural gas में भी mixed form में है. They are the compounds. सब hydrocarbon compounds है. Are you getting me, children? Okay, children. So that is catenation. ये property. It is because of the property that carbon can form bond with other carbon atom, forming a long chain of molecules. All right. And due to this property, a large number of hydrocarbon compounds are formed. And this property of carbon to form bond with other carbon atom to give rise to longer chain of molecule is known as catenation. I hope, children, you have understood. Okay, so that's all in this session. In the next session, we shall continue the chapter. Till then, goodbye.